Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about a very important topic, that is International Solar Alliance. It always remains in the news. If you read any newspaper for 1 year, I'm sure you will come across International Solar Alliance at least 100 times. So Solar Alliance always remains in the news, but recently also it was in the news. Please tell me in the live chat why it was in the news 1 or 2 days back, or I would say last week. It was very much coming in the news. International Solar Alliance. Reason you have to tell me. So we are going to discuss about it, and we have seen some previous year questions also based on International Solar Alliance. Like they had asked about the headquarter of International Solar Alliance. So we'll be discussing about it. We'll be discussing the genesis of International Solar Alliance, why it was established, and why it is so important. Basically, it is a India-led alliance. That is why also it becomes very, very important. So, am I audible, visible? That is why also. Okay, so let us begin. शुरुआत करते हैं, है ना? So, first of all, this is our channel. I'm sure you must be aware. If you have not subscribed, please subscribe to our channel and go to the live section. And yesterday and day before yesterday, I took 2 classes. One was related with 500% tariff regarding Donald Trump's decision. Maybe they will impose 500% tariff. That was actually in the news. And the next is US attacks Venezuela. So regarding the capture of the Venezuelan president by USA, the Delta forces of USA, we have discussed these 2 things. Let us talk about International Solar Alliance. Why it was in the news? Yet CLAT aspirant Debesh, you are welcome. Please tell me why it was in the news. News में क्यों था International Solar Alliance? Why we are discussing it? ये आपको बताना है. It was in the news because USA has recently decided to exit International Solar Alliance, and this International Solar Alliance is an India-led initiative. So I'm sure you must have watched these 2 classes, especially this class and this class. Like these 2 classes, we have talked about how Donald Trump is putting pressure on India not to buy Russian oil, and is pressurizing India by putting tariffs and many other things. Okay, so that is why he has actually also signaled this. So he has actually decided to come out of 66 international organization. Not only one, but 66. And one of them is International Solar Alliance. And we are discussing this one because it is an India-led initiative. Okay. Russia joined ISA during Putin visit, right? So basically, USA is withdrawing. Has decided to withdraw from 66 international organization. One of them is International Solar Alliance. But we are discussing this one because it is an India-led initiative, and it always remains in the news, specifically in the context of India and the exams that are conducted in India. Okay. So ISA continues work with 125 members despite US exit. So whether there will be immediate huge impact, not much huge, we'll discuss about it, that whether there will be an impact of international US withdrawing from International Solar Alliance or not. That also we will discuss in today's class. Okay. It is having almost more than 100 or somewhere around 125 countries. So, sorry. So before beginning the idea of International Solar Alliance, we will discuss why solar energy is so important. So why is it important? Why we are focusing on solar energy? We'll start from the root, start from the beginning, understand the geography of it, and geography also of the countries which are member of this. Yes. So basically it is renewable energy, sustainable you can say. So basically, the idea is earlier humans were using conventional form of electricity energy like coal. Even today also we are using petroleum, natural gas, etc. But these are actually considered as non-renewable and harmful sources of energy. And solar energy is considered as one of the best alternate as far as renewable energy is concerned, because sun's energy is free. Like we are getting a lot of electricity energy from sun, which is free, of course. So basically, this can be used with the help of, like, if we have solar panel, photovoltaic cell, and other technologies, we can use those solar energy
for electricity purpose. That is the idea behind this, है ना? है ना? तो मेन आइडिया ये है कि सोलर एनर्जी जो कि सिंस इट इज नॉन रिन्यूएबल इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स you will get abundance of solar energy, especially if you are in tropical region. We will discuss what is tropical region. If you are living in, let's say, Siberia region or taiga or tundra region, you will not find much solar energy. But if you are living in tropical region, like if you are living in India or these countries like near equator or near tropics, you will find abundant source of solar energy. And because of which, of course, we can utilize those solar energies for electricity generation, for to be used in, let's say, solar cars or like any other electricity, like the any other requirement wherever electricity or energy is required, है ना? So one of the best energy source can be solar one. Okay, so now now since we are talking about the most important thing, that is tropical region, so this is actually a geographical term which we have to understand. So I'm sure you must be aware of it. So this one, actually this is India. I hope you are able to see. This middle one is 0 degree, which is equator. Okay, this one is Tropic of Cancer. कितना डिग्री पे आप बताओ, which degree it is? सर मेरा फर्स्ट स्पैन 27. चिन्ह गुप्ता, अभी आपको पास टाइम है ना? लाइक सजेस्ट मी सम वेज टू इंप्रूव. चिंत्या गुप्ता, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, यू हैव, आई थिंक यू आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर, लाइक इन दिसंबर यू हैव 1 year टाइम. तो हम लोग बताते जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है, एंड यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग इट. सो नथिंग टू वरी राइट नाउ. ओके, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, ठीक है. ओके, तो मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं. देखो अभी ये देखो, ये वाला बीच वाले इक्वेटर जा रहा है. दिस इज इक्वेटर एंड 0 degree इक्वेटर. तो ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, नाउ पहले आपको इस समझ लेते, 23.5 डिग्री जनरली होते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ. इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. 23.43 होता है, लेकिन 23.5 मानते हैं. ठीक है, डिग्री. तो ये कैसे नापते हैं? तो यह जीरो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, मतलब ऐसा समझ लो. देखो यहां पे दिखाता हूं, ये इक्वेटर, ये सेंटर है अर्थ का, है ना? लेट मी गेट विद येलो पेन. तो जो ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये वाला जो एंगल है ना, this angle, this is 23.5 north. ठीक है, और ये वाला 23.5 साउथ हो जाएगा, ये वाला एंगल. ठीक है, तो बेसिकली दिस लाइन विच इज दिस वन, है ना, तो ये व्हाइट से मैं लाइन बना रहा हूं, दिस लाइन इज एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इज इट क्लियर? इज इट समझ में आया? Why we are discussing it? There is a reason behind this. You have got it? ये वाला region जो है, इस ये tropic of Cancer, this is tropic of Capricorn. So this region will be called as tropical region between two tropics. I hope it is clear. This region between the two tropics, tropic of Cancer and Capricorn, will be called as tropical region. So tropical region will have more sunlight as compared to the other region. Okay, we'll show you further also why. इस रीजन में सनलाइट ज्यादा होती है, एंड इफ आई से इन दिस रीजन ओनली यू कैन फाइंड सन. Sir, explain which in the geography teacher. Okay, thank you, CLAT aspirant. So in this region, the sun's rays can fall perpendicular in some day or the other. Not always, but in some day. On some day, कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें इस रीजन में कभी ना कभी परपेंडिकुलर सनरे ऐसे गिरेगी 90 डिग्री.
But beyond the tropics, मतलब इस रीजन में, in this region and in this region, sunlight will fall, but never even a single day you will find it is falling perpendicular. ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इस रीजन में सनलाइट परपेंडिकुलर गिरे. सनलाइट गिर सकती है, गिरती भी है. Sunlight falls on these regions, but they are not perpendicular. Never in the entire 365 days you will find sun rays falling perpendicular. ठीक है, but in this region there will be some day. For example, जैसे ये वाला लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस लाइन पर 21 जून को the sun rays fall perpendicular. I've just given an example. ठीक है, so otherwise this region or this region you will not find perpendicular sunlight. So basically, in short, you can understand that this region will have good amount of solar energy, good solar energy, or solar rays, whatever you can say, incoming solar radiations coming, which can be used to produce solar energy. That is the idea behind this. So that is why the countries which are in tropical region becomes more important for International Solar Alliance. Okay. Now the question is India part of this? Yes. It comes in tropical region. Yes, half of them. The South India is completely in tropical region, and the North India, like Delhi and Lucknow, they are not in tropical region, but we use the word subtropical. थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं तो subtropical word लिख लेते हैं. But generally, so half of India is in tropical region. Second half means like the southern peninsula. If you are living in Mumbai, Chennai, Bengaluru, etc., you are actually in tropical region. But if you are living in, let's say, Delhi, Jammu, Kashmir, or Lucknow, you are not in tropical region. But we can say subtropical region. So of course, India has a huge amount of portion, huge, almost half of the section is actually, or at least 30-40% of the section is actually in tropical region. ठीक है, सो अब कॉन्सेप्ट समझ में आना है. जैसे यूएसए, यहाँ पे यूएसए, इट इज नॉट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस, ये सब ट्रॉपिकल नहीं है. जो कंट्री, दोज कंट्रीज विच आर इन ट्रॉपिकल रीजन, दे आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू. Because we are taught in school days, क्या सिखाया जाता है? That how the plants flourish. Plants को क्या चाहिए? We need sunlight for photosynthesis. This is taught in school days. बचपन में पढ़ा जाता है, नहीं तो स्कूल डेज पढ़ा जाता है कि सनलाइट चाहिए होता है. That is why you will find more trees, more fauna, flora in this region. इसलिए यहाँ पर diversity of plants and animals are more. Why? Because when there is more sunlight, there will be more plants, trees, etc. Because of more sunlight. So when there is more plants and trees, of course, there will be more animals, insects, and many other things. आधे साधे एनिमल तो जंगल में रहते हैं, तो जंगल होगा तब तो. दैट इज वाई यहाँ पर जो है अमेजोन रिवर के आसपास आपने देखा होगा अमेजोन रिवर बेसिन है. अमेजोन फॉरेस्ट, व्हाट वी कॉल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसिएस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ. दिस इज ऑल्सो इन द ट्रॉपिकल रीजन. आई होप इट इज क्लियर. इज इट क्लियर? क्या तक समझ में आया? पहले को कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप रट लो, रट के चले जाओ. I hope it is clear. And you'll find a lot of jungles. Actually, देखो यहाँ पे जैसे डेमोक्रेटिक कॉन्गो है, तो कॉन्गो में यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, कॉन्गो फॉरेस्ट एटसेट्रा एंड ऑल, है ना, लंग्स ऑफ द अर्थ. सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, है ना. अब देखो ये आपको फुली समझ में आ गया होगा. फिर इसके बियॉन्ड भी एक लाइन होती है जो ये वाली होती है, आर्कटिक सर्किल, जो 66.5 डिग्री जनरली होती है, 66.5, है ना. तो ये वाला आर्कटिक सर्किल है, यहाँ पे ऊपर से जाता है. इसका भी स्पेसिफिक थिंग बताऊंगा मैं. ये वाला यहाँ से आई थिंक जा रहा होगा, ये दिस वन 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे नीचे में कहीं पे होगा 66.5 साउथ. तो नीचे वाला उतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट ऊपर वाले सिग्निफिकेंट है. दिस इज आर्कटिक सर्किल. एंड आई एम टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ आप ब्लू वाला देख रहे हो, नॉर्वे. सो हाफ ऑफ द नॉर्वे इज एक्चुअली एन आर्कटिक सर्किल. व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड. लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन? प्लीज टेल मी. And which country is called as land of rising sun? So land of rising sun is Japan, है ना. बिकॉज ईस्ट में जो होता है, जैसे इंडिया में अरुणाचल सबसे पहले निकलेगा,
द रीजन इज बिकॉज सन मूव्स फ्रॉम द अर्थ का मूवमेंट ऐसे होता है वेस्ट टू ईस्ट. लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे कहते हैं. वी विल कम टू दैट. दिस इज द रीजन बिकॉज हाफ ऑफ देम लाइज इन आर्कटिक सर्कल. तो भी मैं बताऊंगा क्यों मिडनाइट सन कहते हैं. अब देखो ये समझ में आ गया दैट अर्थ इज एक्चुअली इन अ टिल्टेड एक्सिस. ये भी क्लियर होगा. इट्स नॉट स्ट्रेट फ्लैट. तो ये ऐसे घूमता है ना, टिल्टेड एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट. It goes from west to east. That is why we say कि sun rises in the east, and that is why land of rising sun at the world level is Japan, and India it is Arunachal, because it is on the easternmost portion. ठीक है. अब देखो है ना, the tropics are the regions of the earth near equator between tropic of Cancer and Capricorn. This is also called as tropical zone और torrid zone भी कहते हैं. ये भी ध्यान रखिएगा. This is also called as torrid zone. ठीक है. एंड इसमें बहुत सारा. ठीक है, आपको दिखाते हैं क्या चीज, क्या दिखाना है. अब देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. वी हैव टोल्ड यू दैट इट इज एक्चुअली देयर इज अ टिल्ट. इसको ऐसे भी कर सकते हो, उधर ही बना सकते हो. हम लोग ऐसे बना हुआ था उसमें. सो नथिंग, अगर आप इसको उधर से देखोगे फ्रॉम द अपोजिट साइड तो टिल्ट ऐसा दिखेगा, है ना. सो आपको टिल्ट पे नहीं जाना कि राइट साइड टिल्टेड लेफ्ट साइड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ अब आप गौर से देखो, व्हिच आई एम मेकिंग इट. ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं 20, यहां पे दिखाते हैं. ये वाला जो है 21 जून एग्जैक्टली जो है समर सॉल्स्टिस कहते हैं, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये 22 दिसंबर है, विंटर सॉल्स्टिस. नाउ व्हाई इज 21 जून फेमस? देयर इज वन फेमस डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून. So 21st June is longest day in northern hemisphere, and 22nd June is shortest day in northern hemisphere. You have to mention northern hemisphere, otherwise in southern hemisphere the thing is exactly opposite. Largest day in northern hemisphere, 21st June is International Yoga Day. You should be knowing it. This is very important. I was waiting for this answer. Very important. Yes, CLAT aspirant. Very good. Huh? So 2014 में this concept was initiated. PM Modi proposed this in United Nations fair. Then it was passed in UN General Assembly unanimously. And from 21st June 2015 onwards, it is being celebrated. Yes, they which CLAT aspirant right. हाँ, 21st June International Yoga Day. अब देखो आपको क्या समझना है. Why I was saying कि वो नॉर्वे को देखो, ये देखो, ये है आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, और ये वाला है ये पूरा अंटार्कटिक सर्कल. तो 21 जून को क्या होगा? सनलाइट पूरा का पूरा पड़ेगा इस रीजन में. सो आर्कटिक सर्कल विल हैव लाइट. ये आर्कटिक सर्कल हो गया. दिस विल हैव लाइट फॉर 24 आवर्स. सूरज की रोशनी रहेगी, डे रहेगा. और ये नीचे वाला जो है, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल. This will have night for entire 24 hours. Yes or no? And this is happening because of tilt of axis. Earth जो है वो tilt है, straight नहीं, ऐसे tilted है with respect to the sun. Is it clear? 21 जून को तो जो नॉर्वे का आधा हिस्सा है वो यहां पे है. नॉर्वे यहीं पे somewhere here you will find Norway. So on 21st June, Norway will have, or north portion of Norway will have नो नाइट. तो 12 बजे रात, 1, 2 बजे, 3 बजे रात में भी, इवन एट 12 PM नाइट, 12 AM नाइट और 1 AM नाइट, देयर विल बी डे. ठीक है, क्योंकि यहां से गुजर रहा है वो 66.5 डिग्री, नॉर्वे के नॉर्थ पोर्शन के, है ना. अब देखा दिया तो यहां दिखा है ना, तो ये वाला हिस्सा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. 12 बजे रात में भी सूरज, मिडनाइट सन, सूरज दिखेगा. एंड दिस इज रियलिटी, है ना. ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है. Okay, that has to be very crystal clear. I have taught you these things because these geographies will help you in exam in solving the questions. ठीक है. मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं कि आपको इंटरनेशनल सोलर एनर्जी बता दी, हेडक्वार्टर बता दिए, डायरेक्टर जनरल का नाम बता दिए, चलेंगे तो फिर वो तो आप रट भी लोगे. You can read it from books or anywhere else. The idea is actually to learn, because when you learn the concepts, you will not forget. ठीक है. Rote learning is very easy and very easily you can forget also. है ना. रटवाना हो तो हम रटवा देंगे, आप रट लो, चले जाओ, तो वो कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सो दिस इज इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इट इज द लॉन्गेस्ट डे. ठीक है. रिद्धि बिच वी हैव टेकन अ क्लास. आप सर्च करना जाके, यू आर आस्किंग अबाउट कोकी मेथी इशू.
आप सर्च करना मणिपुर चीफ मिनिस्टर रिजाइंस करियर लॉन्चर लॉ इंटर्न्स, ऐसे सर्च करना, यू विल गेट द वीडियो. लास्ट ईयर द मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइंड, सो आई हैड टेकन अ क्लास ऑन दैट. ठीक है, but provided you have to actually subscribe to our channel, then only you will get the video when you search it. ऊपर में मिल जाएगा. ठीक है, ओके. ठीक है, तो योगा जो है ना, इंटरनेशनल योगा डे, और योगा इज एक्चुअली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल है ना फिलोसफीज ऑफ फ्रॉम हिंदुइज्म, है ना, शत दर्शन कहते हैं. तो उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट फिलोसफी इज योगा. द फाउंडर इज पतंजलि. हियर पतंजलि इज द पर्सन, नॉट द कंपनीज नेम. ठीक है, ये जो है इन्हीं के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ योगा स्कूल ऑफ थॉट. देयर आर अदर्स स्कूल्स आल्सो, प्लीज रीड इट, समटाइम्स दे आर डायरेक्टली आस्क्ड. तो ये वाला पता होना चाहिए एटलीस्ट. ठीक है, now let's talk about importance of tropical region, although I have maintained it, discussed it, but सबसे पहले मैं बताते, देखो maximum solar energy it will be there, sun falls vertically, है ना, small season temperature variation ज्यादा नहीं होता है, wet and dry season होता है, बारिश खूब होगी यहाँ पे, मैं बताऊं क्यों. And because of it there will be huge rainfall, and that is why you'll find high biodiversity because of rainfall also, rainfall and sunlight. इसलिए अमेज़न, कॉन्गो बेसिन, वेस्टर्न घाट, कोरल रीफ्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ. कोरल्स देखते हो, कोरल्स इस रीजन में सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में. देखो यहीं पे है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन. जितने भी कोरल आइलैंड है, मालदीव्स, लक्षद्वीप, ऑल आर हियर. ठीक है, और क्या बता रहे हैं, है ना, हेवी रेनफॉल एंड मानसून होगा इस रीजन में, इक्वेटर रीजन में खास के बहुत बारिश होती है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सनलाइट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा. हीटिंग होगा तो क्या होगा, एयर विल राइज, गर्म हवा राइज करती है ना, and this will lead to the formation of cumulonimbus cloud. ठीक है, इसलिए इस रीजन में खूब बारिश होती है, आपने देखा होगा बहुत हैवी रेनफॉल होता है. एंड दैट्स यहाँ पे कॉन्गो रिवर बेसिन है, अमेज़न बेसिन है, अमेज़न फॉरेस्ट यहाँ पर, जहां बारिश ज्यादा होगी and you'll find more, wherever you'll find more rainfall there will be more plants and species, animals, है ना. So ये कॉन्गो बेसिन, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, आपको पता होगा, नीलगिरीज उस रीजन में आसपास में. when you search नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व you will find multiple national park there. ठीक है, अगेन द सेम रीजन. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि देखो यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन होता है, इक्वेटर, यहाँ पे खूब बारिश होती है. देखो यहाँ पे, देखो ये बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया, coolgeography.co.uk पे. ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. यहाँ पर वार्म सबसे ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ, है ना. सो द वार्म एयर राइजेस एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हियर. तो यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होती है एवरी डे. What we call it as 4 o'clock shower. If you live in South India, you must have realized it. There is a rainfall happening somewhere around 4 o'clock, almost every day, especially near equator में ज्यादा होता है इस region में. ठीक है, so that is the benefit of in tropical region. There's a dense forest, of course, because there is heavy rainfall, so high biodiversity, more dense forest. ठीक है, अब देखो, since we are talking about these ideas of international like tropical region and utilizing those solar energy, है ना, so that is why India, along with which country, you have to tell me, India plus X country decided to establish international solar alliance in the year Y. Please tell me, what is X and what is Y? Yes, very good. France. India and France decided to form international solar alliance in which year? So in 2015 on the sideline of COP21. साइडलाइन में तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चल रहा था, वही COP21 उसी के साइड में है ना. यस, सिद्धि क्लैट एस्पिरेंट सिद्धि विच, ऑल राइट. हाँ, ठीक है. सो एंड वेयर इट इज हेडक्वार्टर्ड एंड हु इज द डायरेक्टर जनरल. हेडक्वार्टर पूछा गया था इलेक्ट के एग्जाम में. They asked the question, headquarter of International Solar Alliance. Please tell me. And who is the Director General also? Please tell me that. हाँ, गुरुग्राम. वेरी गुड. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोर देन 120 कंट्रीज हैं. ट्रॉपिकल रीजन में वाले को प्रमोट किया था. सनशाइन कंट्रीज मींस दोज हु आर इन ट्रॉपिकल रीजन. सो द इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय पीएम मोदी in 2015 along with and this was established by India and France in 2015. Now it says that if your country is not in the tropical region, still you can become a member but do not have voting rights.
इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप मेंबर बन सकते हो, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा। कोई भी चीज डिसाइड की जाती है ना वोट करके। सो इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल, इफ योर कंट्री डज नॉट फॉल इवन, अगर थोड़ा सा भी हिस्सा है तो चलेगा। Like India, half 30-40% of India is actually lies in tropical region. So similarly, if you are not actually in the tropical region, if your country is not in tropical region, you can become a member of International Solar Alliance. For example, USA, it is not in tropical region, है ना? तो आप ये देखो कहाँ चला गया। USA यहाँ है, USA was a member of it but decided to withdraw. Even France जो है, जिसकी मदद से इंडिया ने बनाया, France is here, but France cannot have voting right again, the same thing, because it is not in tropical region. USA is here. It was a member of International Solar Alliance, but it decided to withdraw. ठीक है, सो ये हो गया। सो ये साइडलाइंस ऑफ COP21 ने डिसाइड किया गया था ना, वो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था। व्हाट इज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव नॉट रेड इट, अगर आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है, then I would suggest please watch this class. My students have said that they have got a lot of benefit from this class. इस क्लास से आपको बहुत फायदा होगा। You will find multiple questions being asked in the future also. So please do not miss this class. This is very very important. Star market. ये लास्ट ईयर का COP30 था, ये आप स्किप कर सकते हो, you can skip it. But this one you should not be missing. This is very very important. All important environmental summits in one class. Star market. ठीक है? Yes, Mr. Ashish Khanna is the new Director General. अजय माथुर रिटायर कर, मतलब उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। Yes. है ना? सो पेरिस हेडक्वार्टर फ्रांस में फाउंड किया गया था, बट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इन गुरुग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम हाइलाइटिंग इट, है ना? ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना है, मोर देन 120 कंट्रीज, यूएसए हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ। फ्रेंच एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। मिस्टर आशीष खन्ना इज द डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये हो गया, है ना? हेडक्वार्टर इन हरियाणा। फ्रेंच उस वक्त प्रेसिडेंट थे फ्रैंको ओलान, इनसे मिल करके बनाया गया था ना, है ना? ग्वाल पहाड़ी कोई रीजन है गुरुग्राम में, वहां, है ना? इनका हेडक्वार्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोलर एनर्जी इन उसी में, NISC। ओके, है ना? सो इंडिया का टारगेट है ना कि 2022 तक जो है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट वाज इंडियाज टारगेट एटसेट्रा। सो उस टाइम पे बात हुई थी ना। टॉरिड जोन, वही ट्रॉपिकल रीजन को टॉरिड जोन कहते हैं। सनलाइट ऑलवेज रीचेस द सरफेस एट एन एंगल एंड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। एनीवेयर नॉर्थ और साउथ, यही ना मैंने बताया था कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स दे विल नेवर हिट द सनलाइट 90 डिग्री। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, है ना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म पूछा गया था क्लैट के एग्जाम में 2021 में ना। दे आर नॉट आस्किंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बट दे आस्क दिस क्वेश्चन। किसी के बारे में पूछे थे XYZ करके, आई डोंट रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे हैव सेड इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह करके 4 ऑप्शन दिए थे। इंटर गवर्नमेंट मींस intergovernmental, so government of different countries are member and these are participating it. Intergovernmental organization between India and France, ठीक है, on the sideline of COP31 in Paris, ठीक है? that is what the idea is. क्या करना है? कार्बन न्यूट्रल करना है। what is the meaning of net carbon neutrality? means whatever carbon we are emitting it, we should be absorbing it back by the help of forest and other things, है ना? So carbon neutral means carbon emission को भी कम करना है। So the best way is move towards renewable energy, है ना? That is the idea behind this. ठीक है, so these are the member countries. अगर आप देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, many of them are not in tropical region, but still they are the country members, है ना? For example, आप देखोगे जैसे ग्रीस है, this is in Europe, but still it is a part of it, है ना? Like that. I have given you some idea. आप देख सकते हो सब कंट्रीज, है ना? रोमानिया इज इन यूरोप, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इट, नॉट इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है? सो एक उनका इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। इंट्रा गवर्नमेंट मींस विद इन द गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट होगी। इंट्रा, समवन इज आस्किंग इंट्रा गवर्नमेंट क्या होगा? देखो, एक होता है इंटरसिटी बस, ऐसे समझना, इंटरसिटी बस सर्विस। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ बस सर्विस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और लेट्स से दिल्ली टू जयपुर, this will be called as intercity bus service between the two city. And within the city, let's say in Delhi, if there is a bus service from, let's say, IIT Delhi to, let's say, I'm just giving example, Anand Vihar, this will be called as, this bus service will be called as intra bus service, intra-city bus service within the city, ठीक है? अपने ही शहर के अंदर। intercity between two city, intracity within the city. Similarly, intergovernmental means between two government,
टू क्या बहुत सारे गवर्नमेंट्स होती. सो गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड. कैसे? बाय एम्बेसडर्स एंड ऑफिशियल्स. आप बोलो कि इंट्रा गवर्नमेंटल क्या होगी, एक ही गवर्नमेंट के अंदर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही, विद इन द गवर्नमेंट दे हैव मेड सम अलायंस. मींस देयर विल बी ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज द इंडियन गवर्नमेंट. देयर ऑफिशियल्स विल बी पार्टिसिपेटिंग अमंग देमसेल्व्स. कोई बाहर के लोग नहीं आएंगे. इसमें क्या है? डिफरेंट कंट्रीज, एक यूएस है, एक इंग्लैंड है, एक अमेरिका है, एक जर्मनी है, एक इंडिया है. सो दिस इज इंटर गवर्नमेंटल. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. फिर एक होता है नॉन गवर्नमेंटल. नॉन गवर्नमेंट मींस, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एनजीओ है, well Amnesty International or any other NGO, they come, so that will be part of NGO, non-governmental organization. I hope it is clear होगा, है ना? So one sun one world one grid initiative क्या होता है? वही ISA का पार्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंडिया और फ्रांस का, टू बिल्ड अ ग्लोबल ग्रीन ग्रिड प्राइमरी फोकसिंग ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी. Connect different region through a common grid that will be used to transfer renewable energy, etc. Realize the potential of renewable energy, etc. मतलब है कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो. यानी अगर एक जगह मान लो पूरे वर्ल्ड से, देखो मैं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का लिंक बना हुआ है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ठीक है. सो मान लीजिए यहाँ पर सोलर एनर्जी का डेफिसिट हो गया, तो यहां से फॉरन भेज दिया जाएगा थ्रू पाइपलाइन और वॉट एवर इज द कनेक्शन. पाइपलाइन नहीं होगा, जो भी ट्रांसमिशन लाइन होगा. सो ग्रिड मींस कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड. So that if there is solar energy shortage and if there is a place where there is enough solar energy, so they can transfer it immediately, है ना? That's the idea of connecting it. So first connection जो है 3 parts में किया जा रहा है, 3 phases में. First है कि मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट किया जाए. तो ये हो गया मिडिल ईस्ट, ये हो गया साउथ एशिया, ये है साउथ ईस्ट एशिया. These things we have discussed. South East Asia, we are actually in South Asia, and this is Middle East. सो फर्स्ट फेज में क्या, इन तीनों को कनेक्ट किया जाए. ठीक है. फिर उसी तरह सेकंड फेज है ना. हाँ, देन सेकंड फेज एशियन ग्रिड विल बी कनेक्टेड टू अफ्रीकन ग्रिड. दूसरा क्या होगा, वही अफ्रीकन ग्रिड बनाया जाएगा, इसको इससे कनेक्ट किया जाएगा सेकंड फेज में. ठीक है. दैट इज हाउ द प्रपोजल इज. उसके बाद फिर क्या, थर्ड ग्रिड में, थर्ड फेज में रेस्ट वन. तो थर्ड फेज में क्या होगा कि बाकी इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया जाएगा. So connectivity of solar energy providing. For example, let's say चाँद को they are short like, or let's say चाँद तो equator region में और tropical region में क्या, मान लो France needs solar energy, so it should be provided by India or by let's say any other country. I'm just giving example. All are connected to each other, है ना? So that whenever it is required, they can the solar energy can be sent through transmission line or whatever is the process. Why we are discussing international solar alliance is because of this. USA has decided to exit the international solar alliance. It was as a one of the first member in November 2021. But now it has decided to withdraw from it. Okay. So they have decided to withdraw from 66 international organization. We are talking about international solar alliance because it is an India-led initiative. Okay. Now officials in, please tell me MNRE ka who is the Minister of New and Renewable Energy? And officials in Ministry of New and Renewable Energy has said that actually we are focused on its objective. Even if the USA has left it, no problem. We'll keep on doing our work. है ना? So अगर US ने withdraw भी कर लिया, what will actually IESA do? IESA will ensure that proper implementation of solar panels should be there. Proper sharing of information technologies. मान ली कोई एक कंट्री है, ठीक है, 125 कंट्रीज है, किसी एक कंट्री के पास सोलर टेक्नोलॉजी है, तो दूसरे को हेल्प करेगा देने के, सेटिंग अप करने में, है ना? अलायंस का ही मतलब होता है. ठीक है. दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस. एंड फॉर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो जर्मनी के पास बहुत अच्छा सोलर पैनल बनाती है, बट जर्मनी डज नॉट हैव मच सोलर एनर्जी बिकॉज दे आर नॉट इन ट्रॉपिकल रीजन. सो जर्मनी मान लो इंडिया को कहेगा कि ठीक है, हम आपके यहाँ प्लांट खोलते हैं, ठीक है, अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ सन सोलर एनर्जी लाइक दिस. मतलब एक प्लेटफॉर्म इसमें सारे लोग आके अपने इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे, है ना, नॉलेज, इवन मनी ऑल्सो, कि जैसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उन लोग को हेल्प करेंगे टू मूव टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, है ना, so that they can be using less of coal or petroleum, है ना. That's the idea behind this. अब देखो इसमें जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ रहा था, it was saying that yes, USA will not funds will not be much affected, but yes, US like expertise will be missed once USA has decided to withdraw. Okay, मतलब ये है कि over the past 3 years, USA has contributed $2.1 million to International Solar Alliance, which is only 1%.
तो बहुत ज्यादा यूएस का कंट्रीब्यूशन नहीं था फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. Okay. However, so from this point of view, operational activities will not be affected. However, will be affecting as far as देखो ये कहीं लिखा होगा, देखो फॉर्मर जो डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की मिस्टर अजय माथुर, he said that the financial loss would be marginal, यानी बहुत कम होगा, because 1% US was contributing in the last 3 years. So even if they will withdraw, nothing much will be impacted. However, their expertise and counsels, because since USA is a world power, they have a lot of experts, है ना. तो वो लोग बहुत सारे एडवाइस देते थे कि कैसे जो है सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को टैप किया जा सकता, वो दैट विल बी मिसिंग. इंडिया विल नॉट मिस द यूएस फाइनेंशियली, बट इट विल सर्टेनली मिस इट्स एडवाइस एंड गाइडेंस. ये है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिस्टर अजय माथुर की राय. Okay, so that is what you should be knowing about. Minister of New and Renewable Energy, which is implementing these solar related things, is actually Mr. Prahlad Joshi. Ministers पूछे जाते हैं. That's why you should be knowing about this. ठीक है ना. कैबिनेट मिनिस्टर याद रखना होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल नहीं पूछते, बट कैबिनेट मिनिस्टर याद रखना होता है. ठीक है, ठीक है. इनका काम क्या है, वही ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो दे हैव टू प्रमोट solar panel, solar related things, है ना, renewable energy related things. That's why international solar alliance में Ministry of New and Renewable Energy का काफी रोल है ना. So we are stopping this class here. We'll be meeting you on Saturday with है ना the Hindu analysis also. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.